Welcome back to Acme Classes Simply Science, a one-stop shop जहाँ पे आपके complex issues को simple terms में resolve किया जाए. In this 4-part video series on biology, we will deal with the chapter life processes. Now this part 1 of the series of 4 videos deals with the topic of digestion. Let's begin. So what is digestion? Digestion एक वो chemical reaction है जो आपकी body में होता है, and क्योंकि body में होता है it's a biochemical reaction जहाँ पे complex food compounds को complex foods को break down करने के बाद उसको absorb करके assimilate किया जाता है. Assimilate करने का मतलब है use किया जाता है. Now ये जो digestion है majority लोगों को लगता है और majority students understand digestion as something that takes place in the stomach. Well, that's not actually true. Digestion starts from the mouth and continues till the food is digested. And therefore, digestion is not something which takes place in one specific location in the body. Mouth में जो digestion होता है, that is mechanical digestion. That is mechanically breaking down food. Mechanically means physically breaking down food by crushing the food with our teeth in our mouth. And therefore, digestion which takes place in the mouth is mechanical digestion. And the digestion which takes place in our stomach and small intestine is chemical digestion. So, digestion starts from the very first step when we take food into our mouth. So, what happens in the digestion process? इसको समझने के लिए basic चीजें understand करनी उससे पहले बहुत जरूरी है और वो basic चीजें क्या हैं? 3 main food groups digestion में break down होते हैं. First is starch. Starch gets broken down into maltose sugar and maltose sugar gets broken down into glucose, which is the simplest form of sugar जो कि body absorb कर सकती है. और body starch directly absorb नहीं कर सकती, but जब उसको break down करके glucose में convert कर दिया जाता है, तो वो easily absorb और assimilate हो जाती है. Similarly, proteins need to be broken down into peptones and peptides and then further into amino acids. It is the amino acid form of proteins which the body can absorb and assimilate. And last but not the least, fats are broken down into glycerides, and then glycerides are further broken down into fatty acids and glycerol. And glycerol is nothing but an alcohol which gets naturally made in our body. तो अगर आपको ये 3 concepts समझ में आते हैं, the rest is easy to understand. So एक बात का ध्यान रखना है, starch has to be broken down into glucose, proteins have to be broken down into amino acids, fats have to be broken down into fatty acids and glycerols. Proceeding. Step 1 ingestion है. Ingestion means taking in food. जब हम food को mouth में लेते हैं, उसी समय हमारी salivary glands start producing saliva. So food mixes with saliva. Now saliva contains an enzyme called salivary amylase. Amylase means a collection of enzymes. And उसमें एक specific enzyme होता है tylen. तो ये तो नहीं है कि सारा स्टार्च माउथ में ब्रेक डाउन हो जाता है, बिकॉज माउथ में फूड ज्यादा देर तक नहीं रहता है, बट जितना भी फूड आपके सलाइवा के साथ कांटेक्ट में आता है, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन स्टार्च गेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म maltose sugar. Maltose sugar in the presence of maltase enzyme, जो कि अगेन सलाइवा का पार्ट होता है, gets broken down into glucose. Now does all the starch get broken down into glucose? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, because again like I said before, food remains in our mouth for a very short duration of time. उतनी देर sufficient नहीं है कि सारी starch को break down करके glucose में convert कर दिया जाए. Then we swallow food. Now this food mixed with the saliva is known as bolus. अब ये food जो हम swallow करते हैं, अगर आप इस diagram को देखें, यहाँ पे ये common area है जिसके through food pass down करेगा. और अगर आप देखें यहाँ पर 2 passageways हैं. First passageway is esophagus. Esophagus is a food pipe, whereas this path leads to our lungs for passage of air known as trachea. अब अगर आप देखें तो फूड का पास करने का रास्ता एक ही है, और अगर फूड हमारे ट्रैकिया में चले जाता है तो प्रॉब्लम क्या होगा? We'll end up choking and dying. So हमारे यहाँ पे एक flap like structure होता है. This flap like structure is called epiglottis. Now when the bolus comes down, जब bolus mouth के नीचे travel करता है, जब हम उसको swallow करते हैं, it presses on the epiglottis. और देखिए क्या होता है. When the epiglottis is pressed downwards, it closes. वो जो trachea का pathway है उसको बंद कर देता है,
उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि फूड हमारे ट्रैकिया में नहीं घुसता और हमें ब्रीथ हम नॉर्मली कर सकते हैं, हमें चोकिंग नहीं होगा और फूड आराम से ईसोफेगस और फूड पाइप में चले जाता है। So the function of epiglottis is to prevent the food from going into your trachea and choking you to death. Proceeding further. Food जब आपकी ईसोफेगस में जाता है तो it has to be pushed down. अब नॉर्मली सबको लगता है कि ग्रेविटी पुल्स द फूड डाउन। यस, ग्रेविटी हेल्प्स, बट बिना अगर ग्रेविटी नहीं भी होगी, अब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वहां कितनी ग्रेविटी है, माइक्रो ग्रेविटी है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू पुल द फूड डाउन। So it is the peristaltic movements known as peristalsis which push the food down into the stomach. And what is peristalsis? Wave-like contraction. तो यहाँ पे अब जो आपकी esophagus है, food pipe है, यहाँ पे contraction हो रहा है और यहाँ पे relaxation. जब यहाँ पर contraction होता है, food gets pushed down. And आप देखिए जहाँ पर पहले contraction था वहां पे अब रिलैक्सेशन, और जहां पे पहले रिलैक्सेशन था वहां पे कंट्रैक्शन है। तो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, साइक्लिकल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ योर मसल्स इन योर ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन्स में भी होती है और ईसोफेगस में भी होती है। Basic purpose of peristaltic movements is to push the food forward. So once the food is pushed downwards into the esophagus, it enters our stomach. अब stomach में जब food enter करता है, तो food is churned. Churned मतलब crushed for 3 hours by the muscle walls of the stomach. और वो एक semi-solid paste में convert हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं chyme. Stomach में gastric ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स। इन सब नेम्स में से जो एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन, ये 3 एंजाइम्स हैं। म्यूकस और HCl एंजाइम नहीं है, बट इन एंजाइम्स को काम करने के लिए, इन एंजाइम्स को इफेक्टिव होने के लिए एसिडिक कंडीशंस चाहिए जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। तो आपका स्टमक नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका pH 1 या 2 के आसपास होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपका इसमें कॉइन डिप करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अराइजेस कि ये आपकी स्टमक वॉल्स को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देता। तो आपकी स्टमक वॉल्स में जो ग्लैंड्स होते हैं वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस एक लेयर फॉर्म करता है बिटवीन द स्टमक वॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी आपकी स्टमक वॉल को डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं आ पाता। वो म्यूकस की लेयर डिस्ट्रॉय करता रहता है और आपका स्टमक म्यूकस की लेयर प्रोड्यूस करता रहता है। एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेवर कम्स इनटू कांटेक्ट विद योर स्टमक वॉल्स। और अगर आपकी नेचुरली ड्यू टू सम प्रॉब्लम म्यूकस कम प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन डैमेजेस द स्टमक वॉल, जिनको हम अल्सर्स कहते हैं। So what is an enzyme again? Enzyme is that chemical compound in chemistry terms called a catalyst which increases the rate of a chemical reaction. In this case ये जो enzymes हैं renin, pepsin, gastric lipase, ये catalysts की तरह act करते हैं in biochemical reactions. And what are the biochemical reactions? Breaking down starch into glucose, breaking down proteins into peptones and peptides. तो जो catabolic reactions जो हमने starting में discuss किए थे, उन बड़े कंपाउंड्स को स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। The enzyme pepsin breaks down protein to form peptones and peptides. The enzyme lipase works on fats and partially breaks down the fats into glycerides. And mucus का function again, what is it? To protect the stomach walls from coming into contact with the hydrochloric acid. Otherwise, it will result in the hydrochloric acid destroying the stomach wall. Proceeding further. अगर आप देखें, once the digestion in the stomach takes place, proteins get broken down into peptones and peptides, and some of the fats, not all, mind you, break down into glycerides. Then the stomach valve known as the pyloric sphincter opens, and the food, partially digested food passes down into this area known as duodenum. Now this duodenum is connected to 2 organs of your body.
the pancreas and the liver through this common duct known as the common bile duct. See, if you see, the liver produces a chemical called bile and pancreas produce pancreatic amylase, and which we'll discuss in greater detail in the next slides. So all of them release their enzymes into the area called duodenum. Now the duodenum area basically works mostly on fats, but for the enzymes to work in the duodenum area, they need to be surrounded by a basic environment. That means be surrounded in a base. Whereas enzymes in the acid work best in acidic conditions, enzymes in the duodenum work best in a basic condition. And like in chemistry, you may have heard of neutralization reaction. The acid which comes down into the duodenum reacts with the base and gets neutralized to form salts and water. So let's see what happens in the duodenum area. So in the duodenum area, bicarbonate ions are secreted, and by bicarbonate ions means base, which makes the medium alkaline in nature. Alkaline का मतलब होता है जब base mixed with water, और ये किसके लिए important है? For the pancreatic enzymes to work. Now bile from the liver breaks down fat molecules into smaller globules. This breaking down of fats into fatty acids and glycerols is known as emulsification of fats. So emulsification of fats is the catabolic reaction of fats. Pancreatic amylase or enzymes consisting of amylase, trypsin and lipase act on starch, proteins and fats respectively. Amylase breaks down starch into maltose, trypsin breaks down proteins into peptones and peptides, and lipase breaks down fat into fatty acids and glycerols. Up till now, the fats get broken down into the smallest components, that is fatty acids and glycerol, but starch or proteins अभी भी further breakdown में होना बाकी है, because maltose sugar को glucose बनना है और peptones and peptides को amino acids बनना है. I think आपको याद होगा, मैंने आपको स्लाइड दिखाया था जहाँ पर starch gets broken down into maltose sugar gets broken down into glucose. Similarly, proteins get broken down into peptones and peptides get broken down into amino acids. Fats get broken down into glycerol. Fats get broken down into glycerides and fatty acids and alcohol called cholesterol. Like I discussed before, ये जो pancreatic enzymes हैं, pancreatic amylase में जो enzymes हैं, they need a basic medium for their functioning. So the walls of the duodenum secrete bicarbonate ions, which makes the medium alkaline. After this, food goes into ileum. Ileum is your small intestine, which secretes intestinal juices known as succus. And it is basically here the maltose sugar gets broken down into form glucose, and an enzyme called ERPSIN breaks down peptones and peptides into amino acids. And if any fats are left, remaining fats, that is in the form of triglycerides, they are broken down into fatty acids and glycerol. After all of this, the digestion has taken place. Then comes the stage of absorption. Now your small intestines have small finger-like projections called villi, which you can see here. So all these nutrients in the form of glucose, amino acids and fatty acids and glycerols basically pass over this villi, which are full of blood capillaries. They get absorbed from the small intestine from a place of higher concentration to a place of lower concentration and enter the bloodstream. This absorption, this going of the nutrients from the small intestine into this villi structure is known as absorption. From here, the blood carries the nutrients to all parts of the body and all tissues and cells where their food is used for various biochemical reactions, and that is called assimilation. After this, any substance or any food particle which is not absorbed is then passed on to the large intestine, which again through all of this, by the way, occurs through peristaltic movements like discussed before. Now, water from the whatever left out stuff which has not been absorbed, which is of no use to the body, is absorbed back, and a hard waste is then excreted out from your anus at the end of the digestive tract. And that is how the digestion takes place in the body. Video 1 related to digestion. Video 2 relates to respiration. Video 3 relates to heart. Video 4 relates to nephron. And in the end, I would like to say that if you did like what we had to share,
Please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.